we are mostly going towards the bagless ideas, where the student doesn't have to come with the bags, and not confidence, connectivity, how to grow their interactive minds, how to. What we experienced a little bit different from Leh and Kargil is like the people in Kargil are a little bit supportive for us. We have is like now they don't have to go mostly for the passing the curricular that they were given to pass their exams. So they have changed from nursery LKG to first they have a 5 year of gap, and then they have 3 years, then 3 years, then they have 4 years. So it's been a totally big change in which they have to just pass to make a student ready for the future, and being into a field like where they can express themselves in the field of a little bit change. And we think we are a little bit successful in Cookstay, where like students are happy to come. We told them to come at around. Determination and hard work. A very good afternoon to everyone present here. I, Said Hassan Shah. And I, Hakima Banu. It's a great pleasure to welcome you all. Such noted personalities as our guests on today's occasion. Let me extend a warm welcome to all of you. Thank you very much for joining us today. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. I invite members of Zamba Foundation to welcome our distinguished guest with traditional khatabs. Schools due to the pandemic, we are here now entering into its third phase starting 15th. उन सब ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में लाइब्रेरी स्पेस को बच्चों के इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप करना हमारा एक बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है। स्कूल प्रोसेसेस के साथ साथ क्लासरूम प्रैक्टिसेस और पढ़ाई के अप्रोच को बदलने में हमारे प्रोजेक्ट्स को सस्टेन करने में स्कूल हेड और टीचर्स का भी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़म्बा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कारगिल के साथ मिलकर अपने प्रोग्राम से रिलेटेड वर्कशॉप्स कंडक्ट करती रहती है। इन वर्कशॉप्स में this kind of things are being done by young generation and young people to nurture our small kids to develop this kind of things and learn, come up from these such remote areas. matlab I'm really understanding the whole thing what you are doing. I would love to be a part of your whatever you are holding, would like to attend those sessions with the children. A very good thing in the society. A place like Kargil, it's really highly appreciable, and their contribution has already put forth, and they are doing their best, and results are also being seen, and we have seen in their presentation. It was a nice documented and nice presentation. We saw it, and from that onwards, from that presentation, I can make out that your contribution is very, very good and a very excellent job. And it is my opinion that we should carry on like that. And as Colonel Saab said, I am also want to be a part of it. Though we have a very tight schedule, anyway we'll spare time like this and we'll interact and go with you all and participate in wherever you have those projects. And regarding funding part, projects, once you give us. There were many other segments also in which the guests were also supposed to interact with us and have detailed discussions, but that couldn't be possible right now. So अभी मैं सिर्फ यहाँ आए हुए सारे गेस्ट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ that they took their time to attend this meeting. सबसे पहले I would like to thank Mr. शिव कुमार NSDCL के जो GM हैं and Mr. lecturer sir जो NSPC से हैं. Sir, we would like to thank you for considering this as you said right now. So उसके लिए भी I really want to thank you. Then I would also like to thank other guests like Kachu Ahmad Khan sir from Kreda, Shahnawaz sir, and
Nasir Shabani sir, Mr. Joseph, who is here from, and in the end, I also want to thank the media fraternity which is here with different news channels, and also a special thanks to Mr. Musa Tumeli, who was the co-contributor to the documentary which you just saw, and all the other volunteers of Zamba who came here for this, especially for this event. जी, जो जम्बा एनुअल मीट रखने का हमारा मेन मोटिव यही था कि यहाँ के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या मतलब करगिल में, लद्दाख में रहने वाले डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी लोग हैं, उन सबको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में पता चले, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो इस तरह का प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि ये टाइम ठीक रहेगा, इसीलिए हमने ये एनुअल मीट किया। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो पहले हमारा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम एक होल चाइल्ड वेलबींग प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें हम स्कूल्स के साथ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जिन प्रोसेसेस पे, जिन इनिशिएटिव्स के थ्रू हम स्कूल्स पे काम कर रहे हैं, उसमें कम्युनिटी को भी इंगेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंगेज करना और सभी को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लेके साथ में चलना। क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे पे काम हो, लेकिन अगर मुशायरे हमारे कम्युनिटी में, हमारे फैमिलीज़ में कोई चेंज ना आए, वहाँ पे अप्रोच वैसा ही रहे, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को पहुँचने वाला नहीं है। तो अगर हमें किसी भी इनिशिएटिव को सस्टेनेबल बनाना है, चाहे वो हम होलिस्टिक लर्निंग का बोलें या फिर हम 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में इनकलकेट करने का बोलें, या फिर एजुकेशन के तरफ पूरा अप्रोच को ही अगर हम लेके चलें, तो अगर हम सिर्फ स्कूल में ही काम करें तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम अपने इनिशिएटिव्स में हमारे कम्युनिटी से स्टेक होल्डर्स को इंगेज करते हैं, चाहे वो वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो या फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो। तो हमारा एक इंक्लूसिव अप्रोच रहता है काम का।